Good morning, all of you. Let us start with your next topic, that is organization of production. So, how a production is organized? क्या क्या चीज़ें, क्या क्या factors required होती हैं production में, that we will see. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. 4 basic requirements होती हैं. Let us see the first requirement. ये सारी requirements को अगर आप एक साथ लाते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, लेबर नहीं है तो आपकी काम नहीं होगी. अगर आपके पास लेबर है, पैसे है, पर लैंड नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो भी आपकी काम नहीं होगी. So there are various factors that are required for proper production. Now let us see. The first requirement is land. The other natural resources such as water, forest and minerals. So first requirement is your land. सबसे पहली requirement आपकी होती है land. Land basically means all the natural resources that we require. Suppose you have thought of starting a manufacturing unit. सबसे पहले आपको ज़मीन चाहिए, वहाँ पे फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए वाटर चाहिए, ब्रिक्स चाहिए. सो ऑल दिस दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंड. नाउ द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क. सम production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks, and other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. So your second requirement is labor. ठीक है, आपकी second requirement होती है labor, that is the people who will do the work. लोग जो आपके लिए काम करेंगे. Suppose you have started a fully mechanized factory, आपने एक fully mechanized factory start कर लिया, but still in that case, in that situation also you require a person to switch on the button. ठीक है, तो आपको लेबर की ज़रूरत है. नाउ लेबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट आर स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर. स्किल्ड लेबर्स में आपके आ जाते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स. अनस्किल्ड में आ जाते हैं आपके सच पीपल हु डू द मैनुअल जॉब. नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल. ठीक है, आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल. ठीक है, फिजिकल कैपिटल में आपकी 2 तरह की कैपिटल आती हैं. दैट इज, इफ यू सी हियर, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड योर नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल. सो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जिसे आप बार बार यूज़ कर सकें. जैसे आपको एक कंसाइनमेंट मिला, सपोज यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ बिस्किट. ठीक है, आपको कंसाइनमेंट मिला 2000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट का. आपने मशीन को यूज़ की और उसे प्रोड्यूस किया. इसके बाद क्या होगा? क्या आपकी मशीन भी डिस्कार्ड हो जाएगी? क्या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिल्डिंग है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा? No. So they are called as fixed capital because they can be used again and again. Now your working capital basically means raw material and money in hand. रॉ मटीरियल, अगर जब आपने बिस्किट बनाने में जो रॉ मटीरियल यूज़ कर दी, दैट रॉ मटीरियल कैन नॉट गेट बैक, दैट रॉ मटीरियल कैन नॉट कम बैक. ओके, नेक्स्ट इज़ योर मनी इन हैंड. ठीक है, आपने जो भी यूज़ किया पैसे रॉ मटीरियल खरीदने में, मशीन्स को खरीदने में, दैट मनी कैन नॉट बी रिट्रीव, दैट मनी कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. ये ऐसे कैपिटल होते हैं दैट वंस स्पेंड कैन नॉट बी बैक. सो देयर आर 2 टाइप्स of capital, that is fixed capital and working capital. Fixed capital includes such things that can be used again and again, like your building, furniture, typewriter, computer, benches. All these are your fixed capital. Working capital means such capital that once spent cannot be brought back. Now there is a 4th requirement too. You will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. एक 4th requirement है, that is human capital. ठीक है, एक human resource को human capital बनाना बहुत ज़रूरी है. Suppose a child is born एंड द चाइल्ड इज़ इलिटरेट. आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तब जाकर वो जब डॉक्टर बनता है, देन द पर्सन बिकम्स अ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, अगर वो इलिटरेट है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, देन दैट पर्सन इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट बी यूज टिल दे आर कन्वर्टेड टू ह्यूमन कैपिटल. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. दिस इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. So basically there are 4 factors of production, that is land, which includes all the natural resources, land, water, air. Then is your labor. Labor includes your skilled and unskilled workers.
Physical capital includes your fixed capital as well as working capital, and your human capital means when the transformation of a human resource is done to a human capital. So as we read through the story of Palampur, we learn about more about the first three factors of production. For convenience, we'll refer to the physical capital as capital in this chapter. So basically the first three, we'll read about the first three factors of production, that is land, labor and physical capital. In the chapter, physical capital is referred as capital most of the time, and your human resource is altogether a new chapter, a fresh chapter that you'll read further. So in the next video, we'll read about farming in Palampur. Okay, thank you so much.